So just see, then I'll open a Postman, and if I want to send a request to delete a record, so you see here, if I am using delete, and this one is our home address slash, when I will send a request, तो delete को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना होगा पैरामीटर, लाइक टू यूज हियर सम आईडी, कोई आईडी पास करेंगे, ये पैरामीटर देंगे. तो let's send a request. ये ओके है, 2000 इस ओके, यानी काम हो रहा है. अंडर सी प्रोडक्ट डिलीट, यहाँ से प्रोडक्ट. तो देखो डिलीट मेथड्स का राउट्स and showing the message product. We can write this code in JSON format. थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको JSON में I want to use status, okay, and message product like this. तो ये थोड़ा सा लुक वाइज सही दिखेगा. तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं, स्टेटस ओके, मैसेज प्रोडक्ट, तो ये भी API हमारा काम कर रहा है. Similarly, we can write some functionality for update product. So export const update product. And if we want to update a record, we have to follow same steps. We have to access the ID of product, and to find out the ID, we have to write request dot arms dot ID, and we can generate some response like status. सीधा सीधा आए और टीम में मैच खेलने मिल गया है. Message सीधा सीधा आए और टीम product updated like this. तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दिया है. फॉर दिस फंक्शनैलिटी वी हैव टू क्रिएट अ राउट. तो राउट्स में जाएंगे, इसको भी इंपोर्ट करना है, अपडेट प्रोडक्ट्स, and here we have to create a route. So what we can write, router dot which method, put method, put. If we want to update, we have to use put method. Update products like this. जब भी आप चेंजेस कर रहे हो, if you are not using nodemon, then you have to execute this command node index.js. Now I want to call this update functionality. So here we have to select put, and when I send a request, so server, तो यहाँ पे error आता है, क्या error है?
404 प्रॉब्लम क्या है जिससे मैंने जो राउट्स बनाया here we are passing parameters और जो राउट्स मेरा बना हुआ है इसमें पैरामीटर 404 आ रहा है so here we have to use odon id पैरामीटराइज बनाया राउट्स को पैरामीटराइज when I use this put method and send the request this product तो यहाँ तक समझ में आ गया how we can create controllers, how we can define functionality, and if I want to access this functionality, so we have to create routes, address बनाएंगे, link बनाएंगे, and that link client can access. That is called API. So here we are creating APIs to access the functionality. If I want to access this get product, so I have to use this API. और इस API को मैं ब्राउजर पे एक्सेस कर लूँ तो ये मुझे ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए ये मुझे इंफॉर्मेशन दे but by default that's the default behavior of browser by default use get method बाकी मुझे बताना होगा इस मेथड से रिक्वेस्ट भेजना है so we have to use the concept of form लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सेस कर रहे हैं बिकॉज ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड यूज करता है क्या पोस्ट मेथड डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा ब्राउजर से इफ आई वांट टू एक्सेस पोस्ट मेथड का भी एड्रेस किसे तो एक्सेस नहीं होगा ये हर बार गेट को ही एक्सेस करेगा बिकॉज देयर इज नो अदर मेथड कि हम पोस्ट कैसे यूज करेंगे यहाँ पे पता ही नहीं चलता so that's why there is a need of fetch there is a need of access इसमें हम बताते हैं कि क्लाइंट को रिक्वेस्ट कैसे देना है किस मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट देना है तो यहाँ तक आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है तो दो लोगों को समझ में आया सिमरन को और दीपक को बोलो रोहित ओके यस सौरभ को भी समझ में आ रहा है Yes, I also got it. Okay. So now I want to switch on next phase. So ये API बनाना तो हम लोग को आ गया. Simple functionality add कर दिए and for this all functionality we are creating routes and this route is registered inside index.case like this. So when client want to access this controller, so first client need to search the routes of this controller. So how client can search a route? तो ये route का पाथ है. तो सर्वर का पाथ क्या है? तो C. कैसे API बनता है? सर्वर का पाथ क्या है? http://localhost port number. That's the server address. On this server, I want to access product routes. Then what's the path of routes? /API/products. So when client will send a request like http://localhost:8080/API/product. So using this path,
client can access this route, right? यहाँ पहुँच जाएगा. And here for all the functionality we are using home address. उसी address को use कर रहे हैं. Only the methods are different. So when I send a request on this address using get method, so get all products functionality you can access. If I want to use same address with post method, create products. With delete method, delete product. With put method, that's a concept. तो यहाँ तक हम लोग समझ गए. अब मुझे करना क्या है? So just in place of this codes, I'll do some changes. अब मेरे को इसके जगह पे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स यूज करना है. मेथड सारा सेम रहेगा. मेथड सेम. Just in place of this, I want to add functionality. I want to interact with database. So if we want to work on database, then what would be the steps? क्या क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा? Address of database. Whatever database we are using, if we are using MongoDB, then we need the address of MongoDB server. If we are using MySQL, there is a need of MySQL server, right? तो मुझे path लेना. Like I want to create a variable called Mongo_URI. Resource identifier field. तो सबसे पहले MongoDB इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में. तो सारे स्टूडेंट्स ने MongoDB इंस्टॉल कर दिया है. MongoDB सबने इंस्टॉल कर रखा है. Okay, so MongoDB का एक डिफॉल्ट पाथ होता है. That default path which you have to use. And there is a default port number. If you are using a local server of MongoDB, so the path is fixed, right? So easily you can find out the path of MongoDB server. So easily you can identify the server path, right? ये कुछ और बता रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए. Path of MongoDB in Express. So the path is fixed with the port number like this: MongoDB :/localhost, and the port number is fixed 27017 and database name. If we are working on we are working on Express.js, so here we have to use same path. In place of this database name, whatever database name you want, you can write. तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम आप अपने तरीके से रख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे डेटाबेस नेम देना है. I want to use PRDDB, suppose PRDDB. So that's the database name. MongoDB यहाँ पे सर्वर के अंदर हम लोगों ने environment variable में रख दिया. Now I want to use MongoDB. So first we have to install Mongoose. So I have already installed Mongoose. Mongoose हमारे पास install है. So now we have to work on config folder. Here on this config folder we have to create a file.